Hi, we are going to decode ECB with International Trade Decoded today. What is ECB या External Commercial Borrowing क्या है? क्यों हम बात कर रहे हैं अभी, जबकि ECB तो काफी वक्त से अवेलेबल है थ्रू RBI regulations? Well, हम ECB के बारे में आप इसीलिए बात कर रहे हैं because RBI has issued a liberalized circular for external commercial borrowing. So we thought that it is a good time to bring about the details of external commercial borrowings and share it with our viewers. But before we move ahead to decode it, a small disclaimer that external commercial borrowings, if you are planning to avail, this video just serves as an information purpose. But if you are planning to avail, you should consult a subject matter expert or consultant like us in order to structure it properly. This video is only and only for basic broader information purpose. So let's start. Let's decode this circular and what all RBI has relaxed. First of all, the external commercial borrowings क्या है? External commercial borrowings, the way it has been worded, it means कि आप लोन अवेल कर सकते हो external, that is outside India से for commercial purposes like manufacturing, expansions, capex, etc. अब RBI ने क्या relaxation दिया है? तो पहले कौन लोन ले सकता था was those entities which are also regulated under FDI. But अब उन्होंने बोला है कि कोई भी entity which is registered with Central or State Act can avail external commercial borrowing. हाँ, individuals लोन overseas individual से लोन नहीं ले सकते हैं. कौन लोन दे सकता है? So earlier it was all the foreign financial institutions, banks, etc. can give the loans. But अब they have very clearly specified 3 specific entities who can give the loans. With this particular relaxation, the major change that they have made is that an NRI can give a loan without being an equity owner or a shareholder of the company, which earlier was mandated, but now it has been relaxed. They do not need to be equity owner of the company in order to give the loans. Second is any RBI regulated overseas entity. Third is IFSC unit. So these are the basics about who can give the loan and who can take the loan. Third, जो सबसे important है जब भी हम लोन के बारे में बात करते हैं तो it is about what will be the rate of interest, because जब हम लोन ले रहे हैं तो obviously कितना खर्चा आएगा, क्या रेट होगा, वो भी तो जरूरी है. So जब ये सर्कुलर के पहले, जब 16 फरवरी के प्रायर सर्कुलर में RBI ने मैंडेट किया था कि अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले रहे हैं तो X% से ज्यादा नहीं ले सकते, that is X% rate of interest से हायर आप नहीं ले सकते. And this ceiling was applicable to loans, prepayment, penalty, etc. But with this circular, they have opened up this aspect, that is rate of interest is market driven. RBI अब कितने रेट पे आप लोन ले रहे हो या प्रीपेमेंट कर रहे हो या पेनल्टी लग रही है फॉर द डिलेड पेमेंट्स, अब RBI उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा. इट इज फॉर यू टू डिसाइड आप क्या रेट पे आपको लोन मिल रहा है और आप अवेल करना चाहते हो. बस सिर्फ कंडीशन ये है कि इट शुड बी इन लाइन विद द मार्केट रेगुलेशंस. और फर्दर कितने टाइम पीरियड के लिए मुझे लोन मिल सकता है, वेल इसके बारे में आपको जानना है तो इट इज कवर्ड अप इन पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज. कीप वॉचिंग. थैंक यू.